अभिमन्यु म्यूट करो, अभिमन्यु म्यूट करो, registration कर दे समझते registration. All learners are informed they should register their name. So this is block 4 of MRDE-2, block 4. As here, state assisted NGOs and rural development. State assisted NGOs and how the rural environment or rural development will be held possible. NGO approach and state policy. How the NGO approaches with the state policy and the state cooperate with the NGOs. The relationship between state policy and NGO approach is crucial to the understanding of the existence and functioning of the state assisted NGOs. It is very important aspects of the state policy to cooperate cordially to the NGOs by which the developmental work will be held possible. So NGO approach, the state and non-governmental organizations share many of the same concern objectives and pertaining to rural development. So state जो उद्देश्य नहीं काम करी था राज्य सरकार एनजीओ मध्य से उद्देश्य नहीं ग्रामांचल विकास क्षेत्र रे सहायता करी था. However, in contrast to state mostly top-down approach, non-governmental organizations usually operate in smaller scale and make more focused developmental intervention in rural areas, upliftment of disadvantaged groups and unprivileged groups. With the assistance of the some NGOs have engaged in targeted programs taking symptoms of poverty, ill health, low educational standard, poor sanitation, inferior housing, etc. The NGOs focuses especially in remote areas, and approach adopted by NGOs have evolved from early life relief measures through village upliftment of the Gandhian era to professionalism among NGOs stressing sound planning, management, coordination in rural development. So sound planning is strategy is very essential, and perfect planning and management and coordination is very essential, inevitable for the rural development. The state should cordially cooperate to all NGOs and in informative manner so that rural development will be held possible. The informative approach center around community organization, especially community organization manankara and development as a prerequisite for participatory development and building of sustainable institutional infrastructure in rural areas. A particular feature that contends to the emergence of NGOs which provide support services to other NGOs in the form of training, evaluation and documentation, as for instance, professional assistance for developmental action, pradhan jaha kuhନ୍ତି pradhan, aneka gudiye NGO सब अच्छे बड़ा बड़ा NGO गुड़िको vast NGOs in our country like Pradhan, Priya, SARS of Bangalore, and that is NGOs, Bhani means Voluntary Action Network, India, as a common platform for promoting voluntary action in India. So, एगुड़िक सबू विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग एवं स्कीम डेवलपमेंटल एक्शन सबू प्रदान करिथांती. प्रदान means the full form Pradhan was professional assistant for developmental action. Professional assistance for developmental action known as Pradhan. So Society for Participatory Research in Asia, Priya Jakunti. So everybody so both bada NGO achanti that also these big NGOs also cooperate and assist to the small NGOs. Those are performing in the rural remote areas. Relationship with state policy. What are the relationship of different NGOs with the state policy? That during different 5-year plan periods, particularly in 7th
5-year plan period 1985 to 90 सप्तम पंचवार्षिक योजना रे witnessed that the expansion of the development activities in rural areas initiated under mission mode such as literacy mission, mission on drinking water, health and family welfare, oil seeds, eradication of chronic disease. 7th 5-year plan ने एगुड़िक सब ऊपर फोकस करा जाइतला थ्रू स्टेट कोऑपरेशन विथ दी एनजीओज एनजीओ मानक द्वारा एई सब हेल्थ प्रोग्राम, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सरकार हाथ को नेकरी एनजीओ सहायता रे बहुत कार्यक्रम करिथिले. These development activities require knowledge and experience of working at a grassroots level in local communities. The Indian state was conscious of the fact that the line department lacked the requisite potential of performing that shortage or lack of different situation or instrument that how to develop the situation and grow the situation for the rural upliftment. However, the need to formulate a sound policy framework has come from the vast growth of NGO. The sound policy of growth and development is only possible due to the vast growth of NGO. NGO non-governmental organization vast growth hebaru desha sara desha re so that rural development is achieved and the need to synergize the work of NGOs with Panchayat Raj institution, Panchayat Raj development, Panchayat Raj institution सहित NGO मध्य कोऑपरेट करी बहुत प्रकार ट्रेनिंग एवं टेक्निक नॉलेज एफिशिएंसी गैदर करी थाए. नीड टू ऑप्टिमाइज सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी हम कोन देखिबा दिस द काउंसलिंग ideas states that the objective of state policy re create an enabling legal environment to promote voluntary action and voluntary organization. Legal ideas and legal environment, a good legal environment should create to promote the voluntary actions of the non-governmental organization. Secondly, promote the involvement of voluntary sectors in the design and delivery of economic and social services to the people, especially downtrodden people. So thirdly, enhance the role of a voluntary sector in advocacy, awareness generation, social mobilization, एगुड़िक उपर मध्य स्टेट पॉलिसी फोकस करवा दरकार. नेक्स्ट होची कंसोलिडेट एंड एक्सपांड द कैपेसिटी ऑफ अ वॉलंटरी सेक्टर टू एक्ट एज पार्टनर ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर प्राकृतिक विपर्यय समय रे सरकार सहित मिलित भाव रे सहयोग रे एनजीओ माने बहुत काम थैथान करितांती लोक मान. So enable the volunteer sector to effectively discharge the role as watchdog of a public institution and to function as conscious keepers of the public functionaries. Public sarakari functionaries madhya सचेतन करिथांती विभिन्न क्षेत्र रे. Provide framework adequate flow of financial resources to the volunteer sector. The state must provide adequate finance to support the voluntary organization. Next, state voluntary organization partnership in development. कौन सब partnership रे development है परिबो. Encourage the involvement of volunteers in public service delivery institution such as school, vocational training center, family welfare centers, public health sectors, hospitals. ये समस्त क्षेत्र रे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप डेवलपमेंट संभव होता है. सो नेक्स्ट आउन देखिबा स्टेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट सहित मिसिकिरी जो विकास मूलक कार्य करिथांती. एनकरेज द यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अंडरटेकिंग वॉलंटरी वर्क सो एज टू इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक एंड कम्युनिटी एसेट्स. सरकारी एवं कम्युनिटी एसेट्स गुड़िक प्रॉपर यूटिलाइजेशन पाई हाउ टू डिराइव द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन
maximum social welfare if proper utilization of the public institution will be held possible. Next, encourage the involvement of voluntary organization in planning at the district, block, village levels, keeping in view the familiarity and of the voluntary sector with local concern and local needs of the people. So, local आंचलिक लोक मानकर आवश्यकता पड़ुथिबो विभिन्न प्रकार सेवा volunteer organization state cooperation माध्यम रे संभव होइता है. Encourage and support voluntary organization for developing and maintaining local database for the purpose of planning. Local अंचलरू विभिन्न प्रकार डाटा तथ्य कलेक्शन करा जाय थाए एवं सेथि पय प्लानिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करा जाय थाए. ए डाटा कलेक्शन करबा पय state directed to voluntary organization. So voluntary organization माध्यम रे that data, the collector, the data or investigator collect the data and furnished in front of the government. So accordingly the planning strategy is undertaken by the government. Data विभिन्न तथ्य उपरे शिक्षा स्वास्थ्य सचेतनता परिवेश इत्यादि उपरे पुअर कंडीशंस ऑफ द पीपल आ पर सब तथ्य कलेक्शन करा जाए. सरकार को फर्निश करा जाय दिया जाय था तापरे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन काम करी था. Encourage state and local government involving voluntary organization in management and operation of various public service facilities and welfare schemes. Next, encourage voluntary organization to mobilize and organize people for preparation, implementation and maintenance of a project at the local levels. Next, involve voluntary organization in providing the widest possible publicity about the objectives, target and nature of benefits. Wide circulation करवा दरकार. लोकल अंचल रे रूरल अंचल रे कोहली बेनिफिट सब सरकारन द्वारा संभव होई पारुछि. So in this part state assisted NGOs and rural development रे state policy and NGO rural development. State policy सब कोन अछि, contribution of NGO मानकर कोन अछि, a closer linkage between the state policy and the expanded role of NGOs in rural economic development efforts in especially during the 10th 5-year plan. 10th पंचवार्षिक योजना समय 2002 रु 2007 भितरे स्टेट पॉलिसी कंट्रीब्यूशन एनजीओ पई बहुत प्रकार स्टेप सरकार नै थिले. It may be noted that till the 9th 5-year plan rural poverty alleviation program taken off under the umbrella type structure of integrated rural development programs, IRDP program, like IRDP program सरकार हाथ को नहीं थिले एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना याकु मध्य एनजीओ माध्यम रे ए गुडी को लोकल अंचल रे रूरल अंचल रे बहुत डेवलपमेंट करे थिले. एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप गोटी ये मध्य 10th 5-year प्लान रे अनेक गुडी डेवलपमेंटल वर्क हाथ को नहीं थिला एनजीओ माध्यम रे. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एसजीएसवाई जोटा कहंती is primarily a credit driven self employment program and would shift to a process oriented approach in 4 stages. SGSY self help group गुड़िक ये जो SGSY माध्यम रे कौन सब करिथिले सोशल मोबिलाइजेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप. सोशल मोबिलाइजेशन करबा पाए सोशल मोबिलाइजेशन हेले कोन हो पर कैपिटा इनकम आय वृद्धि होई थाए एवं एफिशिएंसी दक्षता वृद्धि होई थाए. विभिन्न गुड्स कमोडिटी प्रोडक्शन होई थाए इत्यादि. सेविंग्स हैबिट मध्य बढ़ी थाए. लोक मानकर महिला मानकर and without spending in the extra way. Microfinance credit system also implemented during this period. Micro enterprise development छोटो छोटो क्षुद्र enterprise मध्य development होई थाए एसएचजी माध्यम रे. So SGSY entertained a key role for NGO in formation of SSG. SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना माध्यम रे SGSY formation self help group मान गड़ी उठला.
The government clearly depend on the NGO. सरकार आधे NGO मानक ऊपर निर्भर करथिला. It has no other agency to directly build up this SSG group. The policy to encourage engagement of NGOs in financial intermediation and providing the financial assistance to all the self-help group मध्य विभिन्न प्रकार बैंक माध्यम रे विभिन्न रूरल बैंक माध्यम रे लोन मध्य जोगई थाए एई एसएसजी ग्रुप मानको विभिन्न प्रकार कार्यक्रम इंडिविजुअली ग्रुप अनुसार जहार जा दक्षता अछि जहार जा एफिशिएंसी अछि से अनुसार समान विभिन्न प्रकार होममेड प्रोडक्ट गुडी का तयारी करिथा. So NGO and social sector कोन the economic and social empowerment of women, provision of food and nutrition, nutritional security, survival, protection and development of children and especially girl child are should to be achieved by means of a life cycle approach for developing programs covering all stages of life of women, children in attainment of adulthood. Adult होवा पर्यंत जने युवक अवस्था अचीवमेंट करिया पर्यंत एनजीओ माने सोशल सेक्टर को बहुत गुडी का कंट्रीब्यूशन करिथिले. पिला माने किमति इन्फांट मोर्टालिटी रेट कमिबो एवं प्रेग्नेंट वुमेन मानक स्वास्थ्य अवस्था किबोली ठीक रहिबो इत्यादि हाथ को नै सचेतनता शिविर मान क्रिएट करिथिले. प्रैक्टिकली इन ऑल मेजर इनिशिएटिव इन दिस फील्ड लाइक राष्ट्रीय महिला कोष, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, महिला समक्षा स्कीम, अवेयरनेस जनरेशन प्रोजेक्ट फॉर पुअर रूरल वुमेन एगुडी को सब एनजीओ माध्यम रे कार्यक्रम हाथ को निया जायतिला. एनजीओ तापर आ कोन हैतिला एनजीओ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ए मध्य एनजीओ माध्यम रे कार्यक्रम होतला. एवं एनजीओ एंड लेबर मानक मध्य रे किभଳି संपर्क स्थापन होतला, बॉन्डेड लेबर को किभଳି अवॉइड करा जाउतला इत्यादि. सो इन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर द रोल ऑफ एनजीओस यदि कोन रहउची has been emphasized from the very beginning of Indian planning, and the provision of vocational training for rural youth for employment as well as expansion of rural non-farm sector tap its huge potential in generation of rural employment has been accorded a high priority in the activation of KVIC, which are carried out by their partner NGOs. Self-employed women association सेवा जोटा कहते सेवा self-employed women association which started its work among the women folk of industrial labor families in Mumbai and Ahmedabad is an outstanding example of volunteer action in vocational skill teaching and value addition and income generation for the poor women. जो माने मुंबई अहमदाबाद रे महिला श्रमिक माने काम करथिले सेमानंकु उपयुक्त ट्रेनिंग एफिशिएंसी दिया जाई सेमानकर इनकम सोर्स टाकु जनरेट अधिका करा जाउतला. सेमानंकु केवल भलो काम करि परिबे इंडस्ट्रियल एरिया मानकर महिला माने सेति पय ताकु एफिशिएंसी स्किल नॉलेज टैलेंट इत्यादि सेमान माध्यम रे ट्रेनिंग दिया जाउतला. जा फल सेमान भलो काम सब करूतले अधिका प्रोडक्शन होउतला कंपनी मानकर इंडस्ट्री मानकर so that their income status company also height, so that standard of living automatically increases. NGO technology transfer and extension records watch critical significance are the state sponsored NGO activities in rural areas pertaining to technology transfer and extension, watershed management, drinking water supply, sanitation and habitat development. So technological transfer सबु नुआ नुआ टेक्नोलॉजी मानक माध्यम रे वाटरसाइड मैनेजमेंट किभଳି होई परिबो. आगे कोन मैनुअल वर्क करथले वाटरसाइड मैनेजमेंट रे हातर सब काम करथले परिश्रम माध्यम रे. सो वाटरसाइड मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ट्रांसफर एंड सैनिटेशन एवं हैबिटेट डेवलपमेंट ये सब टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करी एगडा
खूब शीघ्र भल काम हो पारिबो से ऊपर मध्य ट्रेनिंग दिया जाउथला एनजीओ सहायता रे स्टेट हैज मेड एफर्ट्स टू एनकरेज एनजीओज in developing initiative innovative approach agricultural extension through field demonstration कृषि रो विकास हो पारिबो कि भली फील्ड रे सेमानक सब मध्य डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाउथला विभिन्न प्रकार शिक्षा सेमानक प्रदान करा जाउथला स्टेट बिल्डिंग and capacity of NGOs process of capacity building of NGOs so कौन सब capacity building हे परिबो reduction of poverty providing gainful and high quality of employment education of children reduction in gender gaps in literacy हेलो Yes, sir. हां टिके नेटवर्क के प्रॉब्लम हे गला हेलो ओके धन्यता तमे लेटर जॉइन कर लगी Yes, sir. Yes, sir. Sir, मैं आगरू join करी थी, but sir, receive हो न थला actually. अच्छा रजिस्ट्रेशन कर दैछ तो Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट जीवा स्टेट असिस्टेड एनजीओज एंड रूरल डेवलपमेंट सीएसडब्ल्यू गोटे अछि सीएसडब्ल्यू का पार्ट
and NGOs. ये सब social organizations सब Central Social Welfare Board full form गुड़ा मन रखिबो learners full form गुड़ा सब मन रखिबो Central Social Welfare Board CSWB aqua जाय short form रे तापर CAPART Council for Advancement of People's Action and Rural Technology Council for Advancement of People's Action and Rural Development have been promoting NGOs. ये सब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन तो एगुड़ा सब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एमान सब एनजीओ मानकू सेंट्रल स्पॉन्सर एनजीओ मानकू स्टेट स्पॉन्सर एनजीओ मानकू यथेष्ट सहायता करिथांती सो सीएसडब्ल्यू और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कोन करछि दैट इज ए मेजर स्टेट फंडिंग एजेंसी to provide granting aid and other forms of support to registered NGO. केवल registered NGO मानकू sufficient finance granting aid जोगाई था and engaged in welfare and developmental activities for women and children. CSWB functions under the administrative control and the Central Development Women and Child Development program that CSW is involved. And for implementation of programs in areas women's literacy, support services for furnishing microcredit to poor women, and formation of self-help group, employment and income generation activities, gender sensitization, आरि उपरे CSWB बहुत प्रकार कार्यक्रम हाथ को नहीं था इन रूरल एरियाज कापार्ट कौन करी था एटा शॉर्ट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट So I inform to you that CSWB CAPART it is short question important. The Council for Advancement of People Action and Rural Development, jaku CAPART kuha jauchi, was set up during 1980 and under aegis of the Ministry of Rural Development following merger of two bodies that CART and PADI. ये दीटा रंग सम्मिश्रण रे हमर कापार्ट सृष्टिला मर्ज करी गला कार्ट होची काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी एंड पडी होची पीपल्स एक्शन डेवलपमेंट इंडिया ए दीटा मर्ज करी कापार्ट हे गला ड्यूरिंग 1986 so however in practice कापार्ट started its activities by implementing the programs initiated by Ministry of Rural Development such as Integrated Rural Development Program IRDP माध्यम रे जेते जहा कार्यक्रम होची कापार्ट एनजीओ माध्यम रे संभव होची इंदिरा आवास योजना ये सब कापार्ट माध्यम रे संभव होची एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम जोहार रोजगार योजना JRY एगडा सब कापार्ट माध्यम रे काम करा होची नेक्स्ट होची नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कापार्ट करी थाए नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संबल सृष्टि करिबा नूतन जंगल सृष्टि करिबा एवं अन्य सब एसेट क्रिएट करिबा कापार्ट माध्यम रे थाए रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकम जनरेशन एंड मार्केट एक्सेस टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो तमे जानि छ इंडिया रे 2000 परे परे आईटी सेक्टर फास्ट ग्रोथ हला जा फल रे हम देश को एंट्री कला एमएनसी एवं विभिन्न प्रकार मोबाइल सिस्टम इंटरनेट फैसिलिटी कंप्यूटराइज ऑटोमेशन विभिन्न अनुष्ठान मानकर ऑर्गेनाइजेशन ने आईटी सेक्टर डेवलप हेतला से अनुसार गांगोंडा अंचल रे एगडा सब स्प्रेड न कले हाउ द अर्बन एंड रूरल will become equal status will maintain equal status so that CAPART help a lot to make sensitization on the rural development of IT sectors so a block 4 of the unit 2 deals with the community based organization and rural development block 2 hochi unit 2 re block 4 re community based organization and rural development so community based CBO or short form hochi CBO community based organization and rural development CBO short form so significance and emergency of CBO approach. The major objectives of rural development programs have been
alleviation of the poverty, elimination of illiteracy, improvement of health, and consequent enhancement of standard of living, sensitization on health and rural transport communication system, and development of the agriculture. एगुड़ा सब स्पेशली रूरल बेस्ड कम्युनिटी उपरे फोकस करा जाई थाए जहा रूरल डेवलपमेंट संभव होता है। गाँ गंडा अंचल मुख्यतः एगुड़िक ही मुख्य गाँ गंडा बंडल लेबर किभली इग्नोर करा जिवो, अवॉइड करा जिवो, गोती श्रमिक एवं कृषक मानकर उन्नति और विकास होई परिबो एवं महिला शिशु मानकर जत्न किभली निया जाई परिबो एवं अडल्टराइजेशन किभली लोक मानको सचेतन करा जाई परिबो, अपमिश्रण जोटा कहंती अडल्टरेशन। So participation of the target community from the very outset in a rural development project or program, conception, designing and planning of the development program at the local level and rural level with the participation of the rural community. गाँ गंडा अंचल कम्युनिटी मानक इनवल्व करने पड़ी था किंतु वास्तव क्षेत्र में मोर नॉलेज जहाँ अच्छी ये गुड़े सब वास्तव में इम्प्लीमेंट करा जाऊ ना। सरकार जेतिकी योजना जेतिकी स्ट्राटेजी अच्छी वास्तव क्षेत्र में प्रतिफलित ए पर्यंत सुधा आम देशर गाँ गंडा अवहेलित रही कारण ड्यू टू ओनली फॉर करप्शन आउ किछि नुहे भायोलेशन ऑफ लॉज रूल रेगुलेशन यही भली सब लोक मानकर से गांधी गोपबंधु जुग राम राज्य ये सब चली जाइए तेणु केवल आम देखुं कौन ग्रीफ डेस्पेयर एंड पेयर गाँ गंडा अंचल आज चाषी आत्महत्या करुच्ची कौन एते एनजीओ एते सरकार नीति नियम थाई थाई ताले गाँ गंडा चाषी मान को किसी सहायता करा जाउनी तामाने चाषी मान को सचेतनता करा जाउनी। सो कौन होची ताले नैराश्य हताश जंत्रणा रे गति करूचंती गाँ गंडा अंचल लोक माने माइग्रेशन माइग्रेंट होचंती बंडल लेबर हिसाब रे गति श्रमिक भाव रे बाहर हम ओडिसा रे बाहर राज्य को जाउचंती काम करिबा पई इटा भाटी विभिन्न माने घरोई कार्य एवं शिल्प संस्था मानकरे अति दैनंदिन भाव रे हीन अवस्था रे निराशा जंत्रणा एवं हताश भाव रे ग्रीफ डेस्पेयर एंड पेननेस माने गति करछन ए पर्यंत सुधा। सो खाली विभिन्न प्रकार योजना इत्यादि इत्यादि हम देश रे चालू रही। So all these tasks require a consistent time bound and organized participation of local community running a rural development program. Organization rooted in a local communities are formed to undertake and perform these responsibilities so as to institutionalize the participation of community in rural areas. The rural people, community people must involve and they should raise questions to different organization जहाँ जहाँ जिते बड़े जो प्रोग्राम सब जाउची से गुड़ा को ऊपर क्वेश्चन सब करबा उचित। गाँ गंडार लोक कम्युनिटी लोक विभिन्न कम्युनिटी लोक माने सब क्वेश्चन सब रेज करबा दरकार। सरकार विभिन्न ऑफिशियल जेते बड़े गाँ गंडार पहुंचुचंती क्वेश्चन सब रेज करबा दरकार। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है परिबो फॉर्मेशन ऑफ सीबीओ community based organization or CBO are small informal organization based within the local communities or local individuals. This makes it difficult for them to interface with other stakeholders in the development sector such as donors or government agencies. Many CBO community based organizations run development programs sometimes through intermediate NGOs, and a CBO community-based organization needs information and training to plan and implement the project. Even if the CBO has to take charge, its membership will have to spend time for the project, especially the members of the executive committee. Initially, motivation is usually furnished by the external agents. Very often the NGOs once community leaders committee themselves to the idea of forming CBO taking charge of projects
they can motivate, mobilize others. ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଗଠନ ସବୁ ଗଢି ଉଠିବ ବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି କି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବାଡିରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ନଥିବ 5ଟା ବାଡିକି ଏକାଠି କରିଦେଲେ ତାର ଶକ୍ତି ଅଧିକା ପଳେଇ ଆସିବ। So they can mobilize and motivate to all the members, and they can raise question in front of the government regarding their facilitations, regarding their benefits, etc. So CBO ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବେସିକ୍ ଫିଚର ଅଛି। ମେମ୍ବରସିପ୍ ବେସ୍ଡ CBO କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମେମ୍ବରସିପ୍ ସବୁ ଥାନ୍ତି। If a village had the drinking water scheme, for instance, ସ୍ୱଜଳ ଧାରା ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି, ସ୍ୱଜଳ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, then all the residents household will be covered by this scheme. ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କଭର ହେବେ। ଯଦି କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିବ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଆଧରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ତେବେ they will raise question automatically. The village population would thus constitute the community with reference to the project. এই ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଭିଲେଜ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମୋଟିଭେସନ ନେକ୍ସଟ ଫିଚର ହେଇପାରେ CBO ର, the motivation from an outside agency. Outside agency ମାଧ୍ୟମରେ they must be motivated. Government programs, projects are formulated in a ministry or a department and implemented by government agency, panchayat raj institution, NGO, ये सब माध्यमरे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक सृष्टि होता है। An agency implementing government is called a project implementing agency or PIA. So it is very upon the responsibility of PIA to promote the CBO. Project implementing agency माने promote करवा दरकार community based organization को। So CBO may be set up by other development agency too, such as the NGO or private donor agency, multilateral aid institution to implement their own participatory development program and projects. ता सहित ए जो CBO रहिबो विभिन्न क्षेत्ररु समान कलेक्शन करि परिबे, फंड्स कलेक्शन करि परिबे। So that will also help to mobilize, motivate the community based organization. So next feature है पारे representation of marginalized groups. Membership, they must be represented or act as a member in CBO. Marginalized group, executive committee selected by CBO to manage the program, inclusion of women and scheduled caste, scheduled tribe in the executive committee in mandatory in most CBO. एटा compulsory सब ए सब महिला एवं scheduled caste, scheduled tribe लोक माने एटा compulsory, they must represent in CBO. तापर होची features interactive participation, reliance on indigenous knowledge, community contribution, ये सब मध्य रहिबा दरकार ए जो हमर CBO रे community based organization रे। So next होची CBO and rural development. CBO community based organization rural development, how it is possible. The major natural resources like land, water and forest were deteriorating. आम गाँ गंडा अंचल रे भूमि रो ऊपर स्तर आम जानी मोस्ट फर्टाइल land, the surface of the land is more fertile than the interior portion or level of the land. तेणु जदि ऊपर अंश गुड़ाक धोई जीव ताहले माटीर फर्टिलिटी बा प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी फूड ग्रेन्स विल डिक्लाइन ऑटोमेटिक। तेणु तार केमती सुरक्षा रहिबो एवं जंगल सुरक्षा रहिबो, we are deteriorating at an alarming rate nowadays. We are focusing in different areas. The traditional community based institution for managing these common property resources has been bringing down, and a new institution had failed to emerge take their place, so that other organization or institution ए पर्यंत
आम देश रे गठन हो पारनी तेणु कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जदि आम क्रिएट करि परिबा ताले सेमाने ए जो डिटोरेशन घटुची लैंड वाटर एंड फॉरेस्ट ग्राम्य जंगल एगुड़ा सब सुरक्षा पाई परिबो numerous different official programs were initiated to develop and manage water land and forest resources विभिन्न प्रकार सरकारी योजना मध्य विभिन्न प्लान समय रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सहायता रे सरकार कार्यक्रम हाथ को नहीं थांती फॉर इंस्टेंट सर्व शिक्षा अभियान एंड ambitious educational program village education committee are promoted with which have an important role to play implementation of the project सर्व शिक्षा अभियान रे हमर मध्य कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रे हमर सर्व शिक्षा अभियान जो इंप्लीमेंट हेइथला बर्तमान से मध्य बंद कर दिया गलानी ये गोटा एनजीओ माध्यम रे इंटरनेशनल एनजीओ माध्यम रे सर्व शिक्षा अभियान हम देश रे चालू रहितला सो विभिन्न कम्युनिटी किभली शिक्षा 14 वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा दिया जीवो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को माध्यम रे अनेक शिक्षा हम देश रे डेवलपमेंट हेइ परिछ तापर सीबीओ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सीबीओ माध्यम रे फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य संभव होई थाए जो an agreement is made between the state through forest department and the village forest management committee जो गाँ गंडा अंचल सब गाँ adjacent to village विभिन्न प्रकार जंगल बहुत पुराना काल सब जंगल सब थाए तेणु सेठी कौन होची फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी सब गठन करा जाउची गाँ जंगल को सुरक्षा दबा एवं रिलीजिंग फॉरेस्ट एरियाज फॉर अ जॉइंट फॉरेस्ट कमिटी A village forest committee or forest management committee is basically a community based organization. एटा होची community based organization गोटा निर्दिष्ट community की दायित्व दिया जीवो ए फॉरेस्ट अंचल को सुरक्षा दबा पाई forest management committee has to manage a well defined designated forest area a function performed earlier by the state forest department जोटा की राज्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छी से तार हाथ ए कार्यक्रम गोटा फॉरेस्ट जंगल सुरक्षा दौला किंतु देखा गला धीरे धीरे जंगल गुड़िक सब उफान हो गला कुआडे तेणु गाँव रो विलेज कमिटी मान को दिया जाए गाँव रो जंगल सब सुरक्षा प्रदान करा जाउची काहे कि हमें गाँ जंगल को सुरक्षा दबा दैट द इनहैबिटेंट ऑफ दैट एरिया दे अर्न द सोर्सेस ऑफ इनकम कौन सब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एनटीएफपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो गुड़ा आम सब थाए विभिन्न प्रकार झुणा लाख महू एवं जाळेनी काठ इंटैक्ट द एंटायर फॉरेस्ट विल बिकम इंटैक्ट अक्षुण्ण रहिबो जंगल जेभଳି थिला सेभଳି रहिबो किंतु जंगल जात द्रव्य नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट गुड़िक जो गुड़ा आमे से अंचल अधिवासी माने उपकृत हो परिबे झुणा लाख महू एवं जाळेनी द्रव्य एवं अन्यान्य सब खाद्य शस्य मध्य जंगल रु जे छतु कलेक्शन करती ये सब आमर संभव हो पार जदि कमिटी सब गठन करा जाय परिबो एनटीएफपी कलेक्शन करा जाय परिबो द एग्जीक्यूटिव कमिटी has constituent there are different constituent forest department representative ताकर रहिबे जंगल विभाग कर्मचारी रहिबे तापरे पीपुल से अंचल लोक माने रिप्रेजेंटेटिव रहिबे एवं अदर मेंबर्स मध्य रहिबे रहिले गोटा कमिटी हे जीवो जंगल विभाग लोक रहिले गाँव कम्युनिटी लोक रहिले एवं ऑफिशियल अन्यान्य ऑफिशियल लोक सब रहिले सो ये हे परिबो सीबीओ एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सो जंगल सुरक्षा रहि परिबो एवं ता सहित विभिन्न प्रकार कम्युनिटी बेस्ड बा से अंचल गाँ गंडार लोक माने उपकृत हो पारे से भली हमर आउ कोन सब अछि सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वाटर शेड मैनेज वाटर दैट इज वाटर शेड डेवलपमेंट सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वाटर शेड डेवलपमेंट कि भली हो पारिबो विकास हो पारिबो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन village communities were to form watershed association village community गाँ गंडार जो कम्युनिटी सब अच्छी लोक माने विभिन्न जाति वर्ण धर्म संप्रदाय लोक माने अच्छी से माने गोटा कमिटी गठन करेंगे
watershed association ता कुआ जाए और watershed committee displaying all the features characteristics of community based organization. All ग्राम सभा members प्रत्येक गाँव ग्राम सभा मेंबर adult मान तादर सब रहिबे constitute a watershed committee. गाँव युवक मान सब रहिबे रहिगिरी गोटा कमिटी गठन करिवे which will play a pivotal role in the management of the project. The watershed committee will be guided by the watershed development team which will have expertise in certain areas. को अंचल रे जल दरकार एवं चासी मान को जल दरकार एवं गाँ गंडा अंचल लोक मान पई मधुर जल दरकार ए कमिटी माध्यम रे युवक मान थिबे से माने एटा को रिवाइव करि परिबे सेही भली सीबीओ इन पार्टिसिपेशन इन इरिगेशन मैनेजमेंट विभिन्न प्रकार पायलट प्रोग्राम सब चासी मान पई सब करा जाउची सरकार के माध्यम रे एगडा सब ए सीबीओ बा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे संभव होई परिबो सीबीओ अप्रोच फॉर एग्जांपल आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम गोटा अछि सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड organization approach and Aga Khan rural support. So Aga Khan support is development agency promoted by Aga Khan Foundation. Aga Khan gote foundation अछि NGO in Gujarat. Gujarat केवल होछि during 1980 80 रे Aga Khan Foundation गठन करा जैतला. ग्रेट सोशल रिफॉर्म रोल तांकोति आगा खान आगा खान जने समाज संस्कारक थिले जे कि से एई गोटे गठन करिथिले गुजरात रे बड़ एनजीओ इट हैज डेवलप्ड टू एनहांसिंग रूरल लाइवलीहुड जो आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम उडको गुजरात रे लाइवलीहुड जीविका संग्रह पई एवं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रूरल रिसोर्सेस पई इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश गुजरात एवं अन्यान्य महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा रे किभली लाइवलीहुड अधिका लोक माने जीविका अर्जन करि परिबे एवं किभली आय पंथा बढ़िबो ए आगा खान फाउंडेशन माध्यम रे अनेक कार्यक्रम हाथ को निया जायतिला तापर एथरे कोन करायतिला आगा खान फाउंडेशन रे बड़ा बड़ आगा खान का नामानुसार हिच आगा खान फाउंडेशन जने सोशल रिफॉर्म लॉ build asset through community management of natural resources, water storage, irrigation infrastructure, soil conservation and forestry. यहाँ पर फोकस दिया था आगा खान फाउंडेशन increase income growth through improved agricultural productivity. कृषि विकास माध्यम रे कृषि रो चाषबास रो प्रोडक्शन की भले अधिक आबो. If the production output will increase, the per capita income of the farmers automatically increase. Then mobilize local financial resources by promoting savings and providing financial service to village level institution. गांगडा अंचल जते प्रकार सब इंस्टीट्यूशन अछि सेमान को फाइनेंस सपोर्ट करबा एवं एड मोबिलाइज करबा आगा खान फाउंडेशन न कार्यक्रम हाथ को नैथिले. Encourage technical innovation among rural communities so as to environment degradation can be controlled. So technical innovation किभली वैषयिक ज्ञान इनोवेशन करबा नूतनत्व पंथा सृष्टि करबा हमें जा माध्यम रे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को हमें सुरक्षा दे परिबा. एनहांस सोशल डेवलपमेंट स्पेशली इक्विटी सोशल जस्टिस वुमेन एम्पावरमेंट ए आगा खान फाउंडेशन माध्यम रे संभव हे परुथला. तापरे सीबीओ अप्रोच आगा खान इन रूरल डेवलपमेंट रे प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस स्वावलंबनशीलता कि भली परिबो स्किल डेवलपमेंट संभव होई परिबो क्रिएशन ऑफ रूरल एसेट होई परिबो एगुडी को सब मध्य आगा खान फाउंडेशन माध्यम रे बहुत प्रकार आइडिया बा सजेशन लोक मानकू गां गंडा अंचल रे बेस थिबा एनजीओ मानकू छोट छोट एनजीओ मानकू मध्य आगा खान फाउंडेशन गुरुत्व दउथला बा समानकू सहायता मध्य जोगो दउथला. तापरे ए आगा खान फाउंडेशन माध्यम रे इक्विटी सोशल जस्टिस एंड
empowerment of women in rural community. So empowerment rural community manku jodi diya jaye, so if they will empower, they can come forward and earn the sufficient money or wealth. So automatically the family wealth or household sector income will grow. If the household sector income will grow, that will have a very good impact to hike the national income. So its program has tried to bring sustainable socio-economic development in rural areas. So sustainable development कहले one of the big terms sustainable development. आमे कहीं की sustainable development करिबा, आमे रास्ता कंस्ट्रक्शन बा रास्ता संप्रसारण नाम रे आमे कौन करूछंती, लक्ष लक्ष परिमाणर पुराना रास्तार उभय पाटरे जो गछ गुड़िक अच्छी बहु मूल्यवान वृक्ष गुड़िक सब अच्छी, आमे ताको काटिला फल रे हमर कौन होउची ना रास्ता चौड़ा होउची, रास्ता संप्रसारण होउची। काहे कि रास्ता संप्रसारण होउची, आमे कहउछंती मॉडर्नाइजेशन होउची, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होउची, एवं लोक मानकर डिमांड बढ़ुची। द रूट कॉज इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। प्रत्येक देश गोटा देशर प्रत्येक क्षेत्र रे प्रतिबंधक हला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोरण। जनसंख्या बढ़ुथिबारु लोक मानकर डिमांड बढ़ुची। कौन डिमांड बढ़ुची ना फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, खाद्य, वस्त्र, बासगृह, कंफर्ट्स, लग्जरियस, ए तीन प्रकार वांट्स को अभाव को हमें पूर्ण करिया पय चेष्टा करूछ। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर विथ कंफर्ट्स एंड लग्जरियस आइटम। जदि हमर ए सब लोक संख्या वृद्धि फल चाहिदा बढ़ुची, ताले चाहिदा किभली परिपूर्ण होई परिबो ना वेहिकल संख्या बढ़ुची, एक्सीडेंट बढ़ुची एवं शिल्पायन बढ़ुची, सब गुड़ा का ग्रोथ हला। अल्टीमेटली कौन हला ना एंटायर एनवायरनमेंट इज ए क्राइसिस पोजिशन। Serious environment pollution now prevails all over the world due to growth of population explosion. आमे जानी चंती एक्सप्लोजन वाला विस्फोरण। देखो पॉपुलेशन को कहीं की एक्सप्लोजन को आ जाउची, विस्फोरण बोली टर्म कहीं को आ जाउची। अरे एटम बम सिना विस्फोरण हुए, the atom bomb blasts in a particular area, that particular area is damaged, devastated, that particular area is devastated automatically. धन जन एवं बासस्थान सबु ध्वस्त विध्वस्त रे परिणत हो जाए। जेमिति हमर विश्व युद्ध रे पड़िथला नागासाकी हिरोशिमा उपरे एटम बम पड़िथला, से अंचल जापान को ध्वस्त कर देला। किंतु पृथ्वी रे सब अंचल कोन ध्वस्त होइतला कि? किंतु if population explosion will be held, the entire world will be devastated. population जनसंख्या विस्फोरण घटियो माने नाना विपत्ति देखा दिबो, सारा पृथ्वी को ग्रास करिबो। कौन फॉर एग्जांपल कौन होइछि, केमिति विध्वंस होछि पृथ्वी जनसंख्या विस्फोरण माध्यम रे? बेकारी समस्या बढ़िला, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू राइज द पॉवर्टी। दारिद्र्य देखा माने बेकारी समस्या देखा जीवो, बेकारी देखा देले दारिद्र्य बढ़िबो, दारिद्र्य देखा देले कौन हबो? लोक माने जेतेबेले लोक माने ग्रीफ, डेस्पेयर, पेन, नैराश्य, हताशा, जंत्रणा रे गति करिवे, they will turn back to become antisocial, involved in antisocial activities, Maoist, terrorist, Maoism, terrorism रे involve हेबे। so Maoism, terrorist सब हेले antisocial activity हेले सारा पृथ्वी को व्यापीबो। नेक्स्ट ए जो जिमेन कोरोना वायरस आसी पहुंची गला, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज, मैन मेड, नॉट नेचुरल बॉर्न, नेचर बॉर्न एटा ही नहीं। सो एटा होची मैन मेड हला। ए सब होची कोन वाद प्रतिवाद, देश देश मध्य रे माने अहिंसा वातावरण प्रिवेल करिवो। सो देयर इज ए हैम्परिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चिरस्थायी माने बंदोबस्त बा चिरस्थायी विकास हम संभव होई परिबनी। आमे व्यवहार करिवा, we use the capital resources, natural resources today, we should keep it for our future generation,
reserve to some extent for our future generation. We must use and we should keep it for our future generation. Keep it as reserve. आमे व्यवहार करबा सहित आमे हमर भविष्यत वंशधर पई किछि सुरक्षा देई चलिबा. That we can say that sustainable development. चिरस्थायी विकास आको कुआ जाए. जदि आमे जनरेशन अछु आमे भलरे बंचिबा भलरे खाइबा भलरे आमे हमर मंगल हबो किंतु भविष्यत वंशधर भविष्यत पीढ़ी से माने खाली पूर्व जनरेशन को अभिशाप देबे आउ किछि न. तेणु सस्टेनेबल डेभलपमेंट संभव हो पारुनी. जेतिकी गछ काटिले रास्तार उभय पटरे परसोरे आमे सेतिकी गछ प्रतिरोपण करबा दरकार. सेही जगह संभव नहले अन्य कोठी खोला पड़ियार अछि सेति मध्ये आमे सेतिकी संख्यार गछ वी शुड क्रिएट. देन वी कैन से सस्टेनेबल डेभलपमेंट हेल्प. आमे परिवेश रे सुख रे शांति रे रहिबा भविष्यत वंशधर आसिला बेलको परिवेशटी नष्ट हो जाइथिबो पॉल्यूशन हो जाइथिबो खाली कार्बन डाइऑक्साइड CFC कार्बन. We are damaging the ozone layer. Ozone layer now there is ozone hole. Why ozone hole? Because due to excess running of the vehicle and ultraviolet rays come to this earth. Excess industrialization, excess running of the motor vehicles and construction, expansion, etc. Modernization, testing of missiles. So CFC carbon as radiated from this earth. Chlorofluorocarbon जोटा अछि chlorofluorocarbon CFC carbon radiated from this earth and spread to air, and that dash with the ozone layer, because the ozone layer is just like one umbrella. It's a God's gift umbrella. आमे जेमति खरा वर्षा हेले आमे बाहर को छता धरी बाहरी थाउ खरा वर्षा रु रक्षा करिबा पई पाइबा पई. So exactly the God's gift umbrella just like that is ozone layer. ये पृथ्वी पृष्ठ को कौन करिछि अम्ब्रेला भली छत्ता भली ढांकी गिरी रहिछि to protect the generation, the civilization. ए सुरक्षा दवा पई भगवान कर ईश्वर शक्ति देख मनुष्य सभ्यता पशु पक्षी जेते जीवजंतु रहिले याकू सुरक्षा दवा पई एई ओजोन लेयर टा कवर करिक रहिछि टॉप ऑफ द एयर लेयर. The ozone layer consists of 3 oxygen bond O3. तीनोटी ऑक्सीजन बॉन्ड रे सृष्टि हेछि ओजोन लेयर टा. ओजोन स्तर ता कहंती. सो ओजोन स्तर कोन करि थाए तार काम कोन टू डिफेंड द अल्ट्रावायोलेट रेज रेडिएटेड बाय द सन. सूर्य को द्वारा जो अल्ट्रावायोलेट रे आछि ताकू से जो रेडिएशन होछि ताकू से प्रतिबंधक करि थाए पृथ्वी पृष्ठ को छाडी न थाए. जदि इफ देयर विल बी ozone hole केमति होछि the CFC carbon spread from this earth to air, it is dash with the dash माने धक्का खाइबा dash with the ozone layer. So the ozone layer split into different parts. ozone layer जो तीनटा ऑक्सीजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड टा O3 हैला जो गठन है जो बॉन्ड टा सेटा स्प्लिट हो जाए भांगी जाए. केमति भांगी जाए ना जो CFC कार्बन पृथ्वी पृष्ठ रु बाहरुचे ओजोन लेयर से तो धक्का खाए. हमर जेमति गाड़ी रे धक्का खाइले हमर रक्त बाहरे हाथ खंडिया हो जाए देह हाथ खंडिया हो जाए ठीक से भली ओजोन होल हो जिवो कोन दैट इज ओजोन होल. सो ओजोन होल मींस थ्रू दिस होल द अल्ट्रावायोलेट रेज केम टू दिस अर्थ. पृथ्वी वर्तमान काहे कि माने माने कोन hi रहिछि माने उष्ण माने प्रबल ग्रीष्म प्रवाह होछि ना शीत अछि ना वर्षा अछि केवल ग्रीष्म ही ग्रीष्म पृथ्वी पृष्ठ रे. तेणु कहीं होछि ना अल्ट्रावायोलेट रे आसुछि. अल्ट्रावायोलेट रे आसले कोन हुए मारात्मक डिजीज आखिर कैटरेक्ट डिजीज हुए स्किन कैंसर हार्ट प्रॉब्लम डेंजरस डिजीज रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफेक्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ए जो अल्ट्रावायोलेट रे कम दिस अर्थ. आज देखिबो माने विभिन्न प्रकार ए जो वायुमंडल प्रदूषण होला फल रे विभिन्न प्रकार रोग देखा जाउची बिकॉज ऑफ द अल्ट्रा रेडिएशन ऑफ द अल्ट्रावायोलेट रेज. आमे तो मनुष्य जो पृथ्वी को ढांकी रही जो अम्ब्रेला भली जो अल्ट्रा माने ओजोन लेयर ताकू तो नष्ट कला ह्यूमन सिविलाइजेशन कारण मानव सभ्यता
कारण आमे चाहूचंती सब बेले आराम विलास रे बंचिबा पाए सो दैट इज एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री मिजाइल टेस्टिंग काहे के होची ना देश भितर शत्रुता से सब काहे के घटुची ना जनसंख्या विस्फोरण पाए दैट इज माय पॉइंट माय views particularly my views that due to excess population growth that every hurdle every problems come to this earth so जनसंख्या विस्फोरण हेतु आमे जंगल करूचंती so deforestation घटुची excess vehicle running होउची रास्ता घाट संप्रसारण होउची कारण आसीबो पंजाब हरियाणा रो गहम आसीबो एवं नासिक रो आसीबो फळमूल एवं पियाज आसीबो अन्य डेफिसिट अंचल को जोगे दिया जीवो हला जो अंचल रे शॉर्टेज अछि से अंचल जोगे दिया सो दिस आर द प्रॉब्लम as prevails in nowadays in all over the world so the NGOs have vast role কিন্তু practically NGO माने एगुडी को सब not as organizing and they are not performing cordially there is no any government plan strategy and the awareness camp practically is not operated in different areas केवल कागज पत्र कलम आ किछि नै हमें जहाँ देखुचंती केतटा एनजीओ जाई काम करछन रूरल अंचल रे so that's all today in my counseling parts तो दुईटा काउंसलिंग रहिला एटा सरले सरी जीवो थैंक यू सर Thank you, sir. Sorry, Thank you, sir.